सच्चिदानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुनित्यतं नमामि। महायोगपीठे तटे भीमरत्यं परं पुण्डलीकाय धातु मुनीन्द्रे समागततिष्ठन्तमहानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं पाण्डुरङ्गाकरू प्रथमनमन दुसरे चरणा संताजया त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारो बाबाजी सद्गुरुदास तुका गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पहिलो प्रथम याडे जगदंबार चरणेना नमन करण बापू संत सेवालालेर पवित्र चरणेन धन्यवाद प्रणाम करण। जो गुरुर संत महंत वेनगे हाथीराम बापू रामराव बापू मेरा याडे शंकरलिंग बापू छे महान तपस्वी वनेर चरणे नमन करण। जो आज आता काय विजयपुरीमय सानिध्य आता आपण हाय आमले कोण बाहेर गडेती संतोष बापू आणि रवी बापू ते आपण राम बापू से सांभाळायचं तो विषय बापूने चरणे नमन कर। जो प्रभात वेळा दाडे चरणे नामले जो कोण आपण गुरु से संत महंत याडेनो सिद्ध साधक बापूनो तमार चरणे नमन कर। काही केक भा तो कालेर दो 22वां श्लोक में काय विचार होती तो देख भा ज्ञान 3 तराचं सात्विक ज्ञान राजस ज्ञान तामस ज्ञान। जो सात्विक ज्ञानेमाय माणसेनं काय रच भा करून तो जो स्वरूप ज्ञान रच राजसेमाय काय रच भा तो संग्रह बुद्धी रच आणि तामसेमाय काय रच तो पशु बुद्धी रच। तो ये 3 तरार माणस हे जगतेमाय छ जगत राखो माणस આપણે મરણ છ આપણો જન્મ છ મરણ છ કઈ કરણ કાંઈ જો જીવના કરે છે એ છે તામસ જ્ઞાન। જરા આસ તામસ જ્ઞાને કાંઈ કે ભાગ તો પશુ बुद्धी के पशु बुद्धी करण काय करेन के भाव पशुन का होल साय तो पशु काय करच खावच पिवच आणि वर मरण करते जास मालूम छे ने कतको वाटे पर घाटे पर मर जाच और कोई ले जान काय वन काय बाळ्याळो वन काय संस्कार देन वेनी काय देर वेनी। जो आज आपण काय वेगळीच भाव करण करतो आपण बी जन्मेचा कशाने करतो कशाने मरे ना मरेचा का करतो जन्मे इतराच विचार आहे ना काय छेदे काय पशु बुद्धी कच पण ये ना अंग जर तू येती भारान राजसे ते भी भारान जर तामसे ते राजसे ते छोडन सात्विक विचार किदो तो शेर माय जो देव वसोच सेज जो मार स्वरूप च અહીં करणी जगत तो केर सत्ता पर चाल रोस करण कना આપણે अनुभव ज्ञान कचेन अनुभव ज्ञान जना तुकाराम महाराजनो के तुका म्हणे मज अनुभव आलो तरी केले प्रकट तुका म्हणे मज साक्षी आलो तरी केले प्रकट। मन साक्षी हुईच भा मन भगवानेर काय तो साक्षी साक्षी कतो प्रत्यक्ष ज्ञान मन मळीच जना मन प्रत्यक्ष काय मारो अनुभव हुई देख जना मत बेन केरो तू जना ये जगत में शेष शक्ति काय आदि शक्ति आदि माया ये शक्तिर ज्ञान भाग तो आपण सात्विक रिक तो मात्र वच करन केते जना पशु बुद्धी जनाज राजा जनक आणि परीक्षित महाराजार संवादेमाय काय चालच भाग करन कतो परीक्षित महाराजन कज तुमन तू राजन मे दिश्यति पशु बुद्धि माम जही न जातः प्राग भूतद्य देहवत्तम न नमक्षछे। तो श्रीमद भागवते में काय गच हे राजा म मरुचू जो कधी मन मरण च हईकरण काय छदे सुखदेव कच हे राजन म मरुचू न जातः प्राग भूतद्य देहवत्
त्वम न नमक्ष्यसि. तो मरणचं जो हे शरीर मन मरणचं कारण काय विचार करायचं ते का पशु बुद्धी कारण काय जरा हे शरीर पहिलं होतं कोणी आणि मरजर पचबी रेनी तो पहिलो छेनी आणि मरजर पचबी रेनी तो असो ही शरीर जो जनन मरण जो काय છે येन कोण मचू करून समजलो जन पशु बुद्धी भा आणि कारण कच्च नाही पशु बुद्धीमाय जे आपण सारे जगत जीवना करेच मरणचं चमकच जरा आज आपण काय वेगळीच करून करतो हे शरीर ऊ वेगो ही वेगो करून आपण शरीर महत्व देन शरीर बुद्धीमय कतेलो रेमाचा जतलो सतावाळ बिरच देव काढ देव केवाळ बिरच भूत काड्यावाळ बिरच दोरा मंत्राळ बिरच जरा जसे काय के गतो ही पशु बुद्धी गतो ही काय ममसादी शरीरच देहात्मक बुद्धीच ही देहात्मक बुद्धीच कायच भाग होतो पशु बुद्धी ये देहात्मक बुद्धि थी भार आता जो काय अनंत शक्ति जगते में छ वो शक्ति आश्रय लीधे तो ऐसे अनिष्ट छूट जात अनिष्ट छूटता आपण काय माचा भाग तो आपण जो सत चित्त आनंद नित्य परिपूर्ण भगवानेर जो काय आश्रय लेमाचा जना सुखा मळे वाळो जते लुगणी केनी सुखा मळेन साध्य छेने ना काक तो सत वस्तून पकड्या तो सुखाच करणच केते घेव असं सत वस्तूर विचारतम कळलो भा असत्यमय काहीच तो दुःखच असत्यमय काहीच तो द्वेषच भयाच संशयच तो असत वस्तूला रेसे त्रास तो सत वस्तू कूच भाग तो वो कनैवी अपरिवर्तनशील छ ही काही जगत दिकारो छ ही परिवर्तन छ आज छ असवार काय को वो भोज जो कोणे जगत्यमय ही परिवर्तन प्रकृती म करण समजावची देख ही पशु बुद्धी करण केते आहे तो आज 23वा श्लोकेर विचार करा. श्री भगवान उवाच नियतं संगरहित मरागद्वेषत कृतम् अफलस्प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते. नियतं संगरहित मरागद्वेषत कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते. यतत् सात्विक मुच्यते. तो सात्विक छभा यत गतो पुणसो कर्म नियतम शास्त्र विधीती काळ आपण जो पशु बुद्धीती भारान सात्विक विचार जो यत गतो पुणस कर्म जो नियतम शास्त्र विधीती नियत रेन संगरहित कृतार्थ अभिमाने थी जर आपण ही कृतार्थ अभिमान रहित वेताणीन संगरहितम गतो हे कृतार्थ अभिमान रहित वेन अफल प्रेप सुना अफल तो फलार इच्छा बंद करेर अराग द्वेष तीन विचार केमलेस नियम सत नियम कन केमलेस नियम संगरहित आणि अफल फला इच्छा बन करेर अराग राग बन रेर जो द्वेष बन द्वेष करेर कृतम जो जर तत् सात्विकम उच्यते येन सात्विक केमलेस भा. तो केन सात्विक के काले न पशु बुद्धीर विचार करन आज काय के सात्विक के रे जो कर्म शास्त्र विहितेर नियमेती शास्त्रेर अनुसार नियमेती कृतार्थ अभिमान रहित वेन तो म करता म भोगता कसगोंड छोडन फलेर इच्छा रहित फला काय मन मळीय जो असो राग द्वेष छोडन काय जीवना करेर देखा उन सात्विक केम लेज भा. तो ये सात्विक केम काय रच नियतम संग रहितम सात्विकम मुच्यते. जो मानस वर्ण आश्रमेर अनुसार परिस्थिति शास्त्रेर अनुसार जो काय केथे आमलेच देख नियतम एक नियत च आता जीवना को करनु नियत येते नियत कतो को अत स्वरूप केथे आमलेच शास्त्र निषिद्ध कर्म जो निषेध करताणीन संगरहितम संग कना पण छुटत असे सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मलत्वम निर्मलत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वम जीवन मुक्ति है कहते हमले
काय कहत शंकराचार्य नो सत्संगत्वे निसंगत्वम सत्संगे नाव जर पहिले से संग छुटून जाज निसंगत्वम का वो पहिले संग कुरच वो परिवर्तन छो वो देहात्मक बुद्धि री संगेरच तेरी मातो नाश करे रो वो वेगोस करो कहीं कराना केस करो हई से ब्रह्म विषाद दुख केरी संगेरच हो पहले वो संगे कना छूट जाज भाग तो सत्संगत्वम निसंगत्वे निसंगत्वम निर्मलत्व निर्मलत्वात् निश्चल तत्व निश्चल तत्वम जीवन मुक्ती जना जीवन मुक्ती कना वज भाग तो नियम नियम येते कना आपण जीवना करेन सुरू करायचा नियम जगत्यामध्ये देख सत्य लार माणस कमरच तम एकले रेचो तो तम कळणो तमार अंतकरण शुद्ध वेगीच करण तम एकले छो तम ये प्रकृति बुद्धि थी जरा एक देहात्मक बुद्धि वाला मानस तमार सवास छोड़ा के कारण कतो तमार धाई मनस निर्मल योगोच करण समझ लोणो अजी आपण जर वो प्रकृति में छजन होगळन वाते करन ओनेन जो काय छे मान सन्मान री वाते करन आपणला ढगले माणस भाग तो आपण धाई द्वेष करण समझ लोणो का कारण कतो सात्विक माणसेर विचार कुरज भाग तो नियम रस नियत रस नियतम केमले छो तो नियतम शास्त्र निषिद्ध कर्म छोड़ेरो संग रहितम तो काय संग छ ये काय कुणस संग ये तिन्ही काय ये दोई संग छ देख तमो संग आणि राजस संग छोडन तमो आणि राजस संग छोडन काय नियतम संग रहितम जरा आचार्य नो काय के भाग तो है छबा तो जीवना में काय करनो तो आपण जो संग रहित ऋणु भाग तो वो संग कुणस ऋणु सत्संगे में ऋणु सत्संगे में ऋणु जरा सत्संग माणसाने काय करत भाग तो सर्व दुःख निवृत्ती आणि परमानंद प्राप्ती करत सत्संग काय करत सर्व दुःख निवृत्ती करत आणि परमानंद प्राप्ती करत तर असं परमानंद प्राप्ती कुणस विषय ते आपल्याला मळच भाग तो हे संग आता संग रहित असो माणूस आपण संग रहित केमले यार तात्पर्य काय यार तात्पर्य त्राच जो आपण मूढ विचार छोडे भा तोच आपण विचार कळस कर्तृत्व बुद्धी म किदो म माती होई असो काय छे का येन छोडनो जना आपण काय वज कतो आपण एक कीट पतंग छजू आपण जीवना छेनी कीट पतंग आदि वर्ते लक्षात ये काय रच येने नाही आपण जीवना छेनी माणसेर जीवना कूच भाग तो सत्य कळे नामलो तो सत्य स्वरूपा संतरनो शरणनो कावेंडर गे भा तो सत्य विचार की देव कुणसो त्रिकाल आबाधित वस्तूच कुणसो अपरिवर्तनच असो सत्य वस्तू रज वो अनुभव करले ताने काय के जरा असो विचारेनच परीक्षित राजा आणि काय जनक महाराज प्रति जो जनक महाराज आस्थाने में काय आपण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव येतो तो सुखदेव महाराज आणि परीक्षित महाराजर जो काय संवाद व्यक्ती वो तो वेदव्यास उज केवन देख संत्रेर दर्शन कर तो सत्य कळच नियम कळच जरा आपण काय वे जामलीच भाग तो प्रकृति में अभिमान आन पडत म ये कर्तृत्व अभिमान ये म कतेलुणी रच जतेलुणी आपण दैव आपण ला रेनिकस जरा सुखदेव जन्म हुयो जर पर धासन शुरू किदो जना काय वेगी धास्तो जाय लगो धास्तो जालना बाप के उबर का धासरोची उबर संतर दर्शन ल संग कर हई करन के तो भी धाटो जारो तो जरा वत दोय बाप बेटा आंग धास लाडते बेटा धाट बाप धास जारो होत काही कन्यानो अंगोळी कर रही थी अंगोळी कर रही जो कोण ये छोरान देखले ना ये बुंगळो धाटो जारो तो देखले नहीं काही लाज किदी कोनी वो जो कोण गप्प अंगोळी कर रही थी पण ही डोकरा आते गमती लाज करे ना शेमान पेरली थी जना के पच तू हमार बेटा मोठ्यार धासरो जन ओन तम देखन लाज किदी कोनी आणि मन डोकरान देखन तम का लाज किदी कना ओ याडीनो काय की तो देख शब्द घण विचित्र शब्द सामळेर से देख वो आपण अभिमान लान पड़े काय की हो तो देख तार बेटा मुक्त छ योगी छ उन काय संसारेर विचार मालूम छे ने
तू संसारी माणस थी, तू संसार कर्म लो चीज ना तार थाई वासना करें के ना के ते गमती वन सुखदेवन काय वेगी तो मारोड़ा ज्ञानी कोई छे हई वेगी। अब सुख के तो जारी सारी प्रकृति जो बातें करती थी गज, अब सुख को तो कोई बोले ले बोले छोड़ना के का तो म आन पड़ी होता कर्तृत्व बुद्धि आन पड़ी। ये मार शरीर जनाज ये प्रपंच में कह सको तो मान अपमान स्तुति निंदा सुख दुख द्वंद्व धर्म छोड़न रे भाग तो सत्य कळत। आपण एरलार पडेगा तो आपण ओनच विचार करायचा एम वो सत्संग ने तो घण मान दिने ते आणि वत दिने कोणी अतका तम दोषो ने हे से शुरू होस जना ये द्वंद्व धर्म कना छोडोचो जना सत्य कळत। सुखदेवे ना विचार हई आन पडी जना सुखदेवेर लार काय प्रकृति व्यक्ति प्रकृति काय दैवी शक्ति व्यक्ति वो छूट गए आंग जताणी जनक महाराज आश्रम में जान बेसगो भार जना क म आए छु म करन के जना जनक महाराज केन मेलस वो बापू काय पाळामलो देख और संग छोड़े और संग छोड़ ना आएगा वो काय पाळा छु काय लागो ती कणदोरी भी तोड़म फेंक नाखो कणदोरी तोड़म फेंक नाखो जना अजी आन के भला करन के छेनी काय पाळामलो देख कोन छोड़ कर जना आताणी राजा आन भेटी हुए बाहर बैठो तो ये बापू तो भूंगड़ो बैठो तो कहीं लाया तो को नहीं मायर पेटे में ते कुआं तो जूझ बैठो तो जना बैठो जन देख लेन कच बाबा अत तू ही छे मई छे आणि अत ये जग भी छे ने ये काय धिकारोस दे के असत छ सत्य कच कोण एक च उतरिकाल आभादित च उ कनाय भी सत्य चित्त आनंद नित्य परिपूर्ण च अत म कच कोण अभिमान काय तमने न करन के जो कोण कतरा को दाड़ ध्यान की देगे पद्मासन घालेन देखो अतरी की प्रकृति सवासे में अब याडीर पेटे में बाहर आया छो बाहर आया जे में जतरी अभिमान लग गई जर आपण श्री माणस कतरा जन्म आमलेचा आणि कतरा गाम हिंडमलेचा आणि कतरा को संग करमलेचा आपण नाही कतरा ना अभिमान रे ना अत काय शब्द केले कंगड्या वो शब्द गण मुख्य अराग द्वेष अराग अराग तो अराग राग ना ऋण आपण नाही ई राग रिकतोच द्वेष आच राग री आसा रीक तो द्वेष सुरू हो जाचो ईज माणसेर बंधनेन कारणच जना हो नहीं ये काय प्रकृति में कुणच भा एक तो प्रकृतिर गुण आहे जरा आज सारी जगत के पर उभे रोच राग द्वेष पर उभे रोच राग कतो आसा ये याडी होनेर मुंडो हई काय ममलच घरे में कसेर सारो त्रास होच वो सुंदर संसार सुंदर धणीरच सुंदर बिडबिटारच कसेर सारो त्रास हो जाच राग राग कतो आसा जरा ये जगत्ते में जन्मेन मुख्य कारण कुणच भा जनन मरणेन कतो राग जना राग द्वेष दी छोड़ो करन के सेवालाल बापू नो तो भी कहें के काम क्रोधेरी धुनी बाड़ो करन के काम कतो आशा जना ये काम क्रोधेरी धुनी कना बळच जनाज माणसर आनंद मळ्याळो जना ये राग द्वेष ये षड विकार काय करच मनेन कतो देख आपने न कतरा को दाड़ा आपण पर आळकी कर्म लेचो जना वो शब्द कहते के अराग द्वेष कृतम ये अराग ये त्याग करवा ये त्याग किदो भाग तो कृतर तो अभिमान रहित रनु तो जना अपने राग द्वेष कृतम पद विचार के द्वेष रहित राग रहित राग कतो काय आसा हई वेर व्यक्ति न हुई कतो द्वेष वो तो द्वेष करेन शुरू कराचा जना तो सुंदर संसार में कैसे ना कोण हाळ किदो जो कोण कोण खोई हाळ किदे गोते राग ओनेर दुसरेर संसार नाही आपण उणू कतो कोण राग ओनेर बेलबेटा नहीं आपण बेलबेटा उणोकन राग अब ठीक है आपण बेलबेटा अंग विकल हुटमलच वेंडे हुटमलच जना आपण बाजूर घरे में एक घरे में एक बेटा अंग विकलच आणि ऊ जो कोण देख वेंडो हुटमलोच बस आज भी आपण करू प्रति ई करू देख आज राग करू काय करन मार बेटा भी वर नाही वेजात करन हई करा नाही आपण काय कराचा का तो आपण काय मळमलोची संसार छोड़ना अपन छेनी जो गुण काय बहसा था देख वत राग वो न हुई गो तो द्वेष आज सारी प्रकृति में ये तीज काम चाल रहा ये दी छोड़ दे जग छेने जना ये काय पशु बुद्धि है ये काय पशु बुद्धि आपने जो मळमलोच वो आपण भाग्यच ओने जो मळमलोच ओनेर भाग्यच आपण कू रेरच तो निश्चिंत रेरच निश्चिंत आपण चिंतन कशेरो करेरच वो भगवानेर करेरच
અને આપણે પ્રકૃતિ સંગ રહિત આપણે કાંઈ દ્વેષ ત્યાગ કીધે ભાગ હતો आपण केम बदकरेचा तो शरीर इंद्रिय अंतकरण ये मैं राग द्वेष न रिभा करन कतो वत कुरज भा अराग द्वेषतः ये शब्दारा विचार काय कहते गे तो अफल प्रेम सुना जरा अफल फलेर इच्छा भी छोड़नो होत राग न ऋणो द्वेष न ऋणो आणि फलेर इच्छा हई जर रिभा कतो वो फल कुरच कतो माणसेर कर्म कुरच निर्लिप्त रस निर्लिप्त गतो अलिप्त आणि निर्लिप्त दी शब्द अलिप्त गतो फलेर इच्छा रेरो निर्लिप्त गतो फलेर इच्छा रहित रेरो कना निर्लिप्त वचो देख जना असंग वच असो असंगज काही केरावच भागतो सात्विक केरावच जरा आता सात्विक विचार केते आमलेच सात्विक कर्म कुरज भागतो ई प्रकृति में घणो सूक्ष्म रूपे ते रच घणो सूक्ष्म प्रकृति में येर कना आपण असंग अकर्म जो आपण करा जगतो एम घण कळन घण असंग जरा ई संग रहित रेरो घणो सूक्ष्म विचार सूक्ष्मची न धर्मराजा नेकलेनच मालूम येते विषय धर्मेर विचार धर्मराजा नेकलेन मालूम येते जरा दुर्योधन आताडीन पूछच भियाप सवार मार विद्ध छ भीमेर जोडी पछ म काई करू एकलो रेगो छु पछ मार मरण जास्त वार भीम मारनाकस मन करंकस અહીં કહેતે ગમતે કેન પૂછન આમલો છું વૈરી માણસને જ પૂછન આમલો કેવાળો કુણ વર વૈરી પૂછન આમલો છો કોણ કુણ વર વૈરી પણ વત દેખ કુંચ असंग કુંચ દેખ વત ધર્મરાજાને માર ભાઈ ભીમાच करण बी છે ને आणि दुर्योधनच करण बी છે ने वजान काय गचवन उपाय कस काय उपाय कस देखो आपण केवाळ ते विचार करा आपण सात्विक का होणे आज नाम प्रभाती नाम लचकतो आज होणे नाही कतरी सात्विक ते व्यक्ती देख जरा कचो दुर्योधने ना मार भाईच कचो कोण संग छे ने असंगच अंगन काय के ठीक छ तू कशन मरेची याडी तपस्या कर मलेच याडी धाय जाताने जर तू तर निज जो काय तू निर्वस्त्र वेताणी न जान उबरगो आणि याडी तन उपरेती हेटेलुंगणी दिटी तार सारे शरीर वज्र वेजाच तो भीमान भी मार बहुत करन उपाय दिनो देखो वो रोज भाई दोई विद्रा विदर वैरी विद्ध करे नामलेच विद्ध करे नामलो जे माणसे न वैरी माणसे न वो तो उपाय दे रोज तो कत बेसन दे रोज असंग जागे पर बेसन दे रोज आपण जर देमाचा काय आपण बुद्धी अत्री भली विचारून तो जेर कारण ये जगत्य में देख असंग शब्द काय छे देख ई घण अद्भुती आपण सेज संग लगाड़े बेटे वेरेचा जेती आपने आनंद छे ने बेटार विचार बेटीर विचार बाईर विचार घरेर विचार अस्थिर विचार ऐसे संग च आपने जेती आपने काय भाग तो राग द्वेष आवच राग द्वेष न आवणो तो असंग ऋणू जरा सात्विक केराव जरा प्रकृतीर विच्छेदन करणू आपण अकर्म येनच अकर्म के अकर्म गतो कामच बेनी होत कारण सत कळ जाच सात्विक कळ जाच म करता म भोगता डर जाच म करता म भोगता डर जाच पण होत काय रच गतो प्रारब्ध अनुसार काम चालू करत जगत भी केव करत काय भा ये घरे मच देख यही केव करत घरे मच काने रह नु कथी काने रह पण असंग रच जना येन सात्विक करण केरेज भा नाही सात्विक उच्चते करण सात्विक विचार येते गे जरा आपण काय करेच भाग तो सात्विके में हई सूक्ष्म चगोळ विचार सूक्ष्म विचार ना ये सूक्ष्म ते अति सूक्ष्मच तो आपण से आज बातें कराचा तुकाराम महाराज श्री मान संत अतरा अतरा से संसार करण डर गए तो चो कहीं वेते को नहीं कहीं वो किदे को नहीं कहीं कारण आपण देहात्मक प्रकृति बुद्धि ती बातें कराचा पण आपण कत वरून बातें करायचा आपण राजस तामस असत्य संगेन वरून बातें करायचा पण वत सत कळदा मला जो कोण माणसर न करता न भोगता वो कहीं करेरी छे ने न भोगेर भी छे ने अन जनन भी छे ने ओन मरण भी छे ने असो त्रिकाल आबादित सत्य चित्त आनंद नित्य परिपूर्ण जो विचार करले ताने कुंड रस देख उन सात्विक भाकरण कहते हैं जरा नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम नियत नियमे पर पकड़े नियम पकड़े ताने नियम नियम असी गणचो नहीं कहते गे तो जरा अफल प्रेप सुना कर्म अफल फलेर इच्छा बन करेर आणि यतत यतत
सात्विक मुच्यते यततत सात्विक नाही सात्विक देवा असं सात्विकेर विचारे में काय काय कारण केव आज चार विचार काय के नियम संग रहित अफल अफलगत फलेर इच्छा कर्मत राग द्वेष जो आणि ई कृत ई म करो चुक चुकण असं जर विचार छोडे तो सात्विक केरावचं असं सात्विक ते काय वच भाव करण तो देख अकर्म वच अकर्म काय करत भाव तो न करण तो न सर्व दुःख निवृत्ती आणि परमानंद प्राप्ती जो सत्य वस्तून कळाव जस विचार तो प्राप्ती वच कोण विचार सात्विक ते आहे तर आपण बी काहीच भाव करण तो असं सात्विकेर जर सहवासे में रे तो आपण बी जो सर्व दुःख निवृत्ती करले जो शक्ती भगवान आपण दे जरा अंत करणे में काय राग द्वेष छदे येन काढे सारो जी प्रयत्न चाल रही आपण से प्रयत्न ही चाल रही कोण दाडी कुणसे घरे में ती राग द्वेष डर जात वो घर मोटो घर वे जात वो घर मोटो घर वे जात लट्ट घर करन तो हम रात सांजे विचार भी बूझ के गुज्जू बापनो लट्ट घर बंधामले छे कोट रुपयारो लट्ट मोटो घर बंधामले बस मोटो घर बंधामले को तो ये घरे में मोट विचार ऋणू नानके विचार न ऋणू करणच के जना राग द्वेष डर गई को तो वो घर सुंदरच घर रच राग द्वेष आन पड़च प्रकृति में देहात्मक बुद्धि में अपन रे भाग तो मार संसार और संसार वो है ये है जर आन पड़ी भाग तो वो काय जात वो घरे में आपण दी तीन घर करेन काय तडावे ने जना आपण काय करनो भाग तो ये मोठे घरे में मोठ मनुष्य तेरे भाग तो आपण बी मोठ करालेन रजामाचा जना असंग अकर्म आणि काय फलेर इच्छा छोडन जर जीवना के तो वो जीवनान सात्विक जीवनाकच वो सात्विक जीवनान भगवान दर्शन वच भगवान भेटी वच जना आपण शेन इच्छा कायच तो मनुष्य जन्म में भगवान भेटी काणा मिलेचा आपण लाभ करलेन श्रेयो करलेन जायच जना श्रेयो दाडी आपण सनते गे तो कळच भा सूक्ष्मची करण के जना एक शब्द लास्टन बळसायो सूक्ष्मच भा प्रकृति में सूक्ष्मच नास सूक्ष्म विचार आपण मतीन कळेद आणि आपण बी काय करे तो मोठ जो माणसेर जन्म महाभाग तनु मानस काय बापुराव आपण क्यों कर दे जना असं सेम महाभाग चाहिए असो महाभाग्य आपण मळो हे भाग्य ना आपण जो काय परमात्मा विचार बोलाय जे वाणी कृष्णार्पण भगवान अर्पण करून जय सेवालाल सेन राम राम।